Hello everyone, welcome to Dakshana e-classroom program, and this is a solution video for paper DT11 for part physics. So I hope everyone tried their best, and after that paper, it's also important equally to know the problems, to understand the questions which you were not able to solve in exam, and I hope this video will be helping you in clearing all your doubts and helping you in understanding the question which you were not able to solve during your exam. So let's continue without any delay. So question number 1, velocity of sound in air is given as 320 meter per second. A closed pipe closed at one end has length of 1 meter. The pipe can resonate at frequency. So question number 1, yeah, so we know the resonance frequency is equal to what? 2n minus 1 divided by, for a pipe which is closed at one end, V divided by 4L, and L is given as 1 meter. So the resonance frequency, like this is equal to, you can write this is first will be fundamental frequency will be V by 4L, and it's given as that speed of sound is given as 320. So this can be written like fundamental frequency will be 320 divided by 4 into L is 1, that is 80 hertz. And the next frequency for first overdone, that will be equal to 3V by 4L, and that is equal to 240 hertz. And the next one will be F2 will be 400 hertz. So out of these, the pipe can resonate either at this, and this. This is the available option, so right option will be matching with option 2. Question number 2, this is 1. Two pipe are submerged in sea water arranged as shown in the figure. A pipe A has length L is equal to 1.5 meter and one end open, contain a small sound source that set up the standing wave with the second lowest resonant frequency of that pipe. The sound from the pipe A set up a resonance in pipe B that has both ends open. The resonance is at the second lowest resonance frequency of pipe B, the length of the. तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि A की पाइप लेंथ कितनी है 1.5 मीटर. लेट्स से द स्पीड ऑफ द साउंड इज V. तो इसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? V by 4L. That is equal to, you can write V by 6. This will be the resonant fundamental frequency. The next frequency can be like F1 will be V by 2, and F second will be like 5V by 6. So these are frequencies, and it's saying it's resonating. This sound from pipe A set up a resonance in sound source that set up the standing wave with second lowest resonant frequency. So that means this is the second lowest resonant this is the second lowest resonant frequency. This is, and I can write for second resonance lowest frequency, I can write this 1.5 will be equal to what? This is 3 lambda by 4, and this implies actually lambda is also equal to 2 meter. Okay, this is what, and now it says B pipe is what? It's open at both the ends. So here the first frequency will be corresponding to when what, like lambda by 2, and second lowest will be for lambda. So यहाँ पे पाइप की लेंथ पूछी गई है, और इसी के लिए ये भी, तो यहाँ से अपन ने ये देख लिया कि बिकॉज फॉर पाइप ए की लेंथ ये है, इट्स रेजोनेटिंग इन सेकेंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो मीन्स वेव लेंथ ऑफ दैट वेव इज 2 मीटर, और ये सेम वेवलेंथ उधर सेटअप की जा रही है विच इज सेकेंड पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड. सो दिस इज द लोएस्ट एंड द सेकेंड लोएस्ट विल बी दिस वन. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसके लिए लेंथ ये सेटअप कर रहा है और वेवलेंथ यही है, तो इसकी पाइप की लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ विल बी इक्वल टू 2 मीटर. सो दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम. सो दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Okay, question number 3. A resonance tube is resonated with tuning fork of frequency 256 Hz. If length of resonating air columns are 32 cm and 100 cm, then end correction will be. तो यहाँ पे आपको end correction पूछा गया है question number 3. So end correction में इसमें आपको लेंथ दे रखी है, देखो फर्स्ट के लिए लाइक 32 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट लेंथ इज 100 सेंटीमीटर. और यहाँ पे क्या रहता है, देखो डेफिनेटली रेजोनेटिंग कॉलम में क्या होगा, इट्स लाइक इट्स फिल्ड विद सम वाटर और सम लिक्विड, तो मतलब वन एंड इज डेफिनेटली ये कंसिडर्ड एज क्लोज. तो उसके लिए अपन बोल सकते हैं फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, L लाइक प्लस E, L1 plus E should be equal to what? Lambda by 4, and second L2 plus E should be equal to 3 lambda by 4. और ये आपको दे रखा है लेंथ is given as how much?
32 centimeters. So this you can write L1. So you can write 32 plus E. This is equal to 100 plus E. This minus that will be equal to lambda by 2 equal to this is what 68. Lambda is equal to 68 multiplied by 2. इस lambda को मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस इक्वेशन में, तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा 68 by 2 by 4 equal to 32 plus E, that is equal to 34. This implies E is equal to 2. So end correction of the pipe is 2 centimeters. This is question number 3. Next question number 4. Tuning fork produces a wave of wavelength 110 centimeter in air at 0 degree Celsius. The wavelength at 25 degree Celsius will be. तो यहाँ पे देखो ट्यूनिंग फॉर्क का क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है. सो वेवलेंथ विल चेंज इफ स्पीड ऑफ वेव और साउंड इज चेंजिंग. तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं बिकॉज v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा. सो दिस विल कीप कॉन्स्टेंट. दिस इम्प्लाइज v1 by lambda 1 is equal to v2 by lambda 2, and on changing the temperature our v2 will change. So lambda 2 is given by v2 by v1 into lambda 1, that is equal to, और v क्या होता है, it's proportional to root over temperature. So this is equal to 298 divided by 273 0 degree Celsius multiplied by lambda, it's initially 110 centimeters. Simplifying it, we get lambda is equal to around 115 centimeters. This is the answer to the problem, matching with option number 2. Question number 5. Alright, which of the following is are correct? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ग्राफ के, वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड एयर एंड, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो v इज इक्वल टू रूट ओवर पी बाई गामा पी बाई रो होता है. लेकिन another thing is that here this graph does not start, means when pressure is low then it doesn't mean like the velocity of the sound will be 0. It doesn't start from, so first is not right answer. Similarly temperature, it's definitely like v square is directly proportional to temperature but not 0 degree Celsius, it's absolute temperature basically. So velocity of transverse wave in a string, तो वो अपने पास रहता है v is equal to root over t by mu. So yes, v square is equal to t by mu. This is also a parabolic and here it's like actually अगर टेंशन इसमें 0 होती है तो वहाँ पे चीज़ें exactly. So third will be like matching its correct option. So 3 in the like is the right answer for question number 5. Next question number 6. If volume elasticity, means that is bulk modulus of fresh water and sea water are assumed to be same. So means bulk modulus is same. It is necessary that for the velocity of the sound to be same. तो velocity of sound अपन को समझ में आना चाहिए. Question number 6. v is equal to root over b by rho. तो यहाँ पे ये सेम बोल रखे हैं और velocity सेम होने के लिए this implies rho must be same. ठीक है ना. तो अब rho किसकी बात की जा रही है, सी वाटर है, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. सी वाटर के लाइक क्या होता है, हाईली लाइक केमिकल लाइक मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड सो दैट डेंसिटी इज हायर. अब इसमें बात की जा रही है, इट इज नेसेसरी दैट फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड टू बी सेम. तो किसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी घटती है. ठीक है ना. तो फ्रेश वाटर की डेंसिटी तो पहले से ही कम है, सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसको अगर सेम डेंसिटी करनी है तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए. सो दैट इट विल बी द फ्रेश वाटर मस्ट बी एट हायर टेम्परेचर, डेफिनेटली नॉट. सी वाटर मस्ट बी एट हायर टेम्परेचर, येस इट्स करेक्ट, बोथ मस्ट सेम, नो दैट्स राइट. सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन number 6. Next question number 7. The average density of Earth's crust 10 km beneath the surface is 2.7 gram per cc. The speed of the longitudinal seismic wave at that depth is 5.4 kilometer per second. The bulk modulus of Earth crust considering its behavior as fluid at that depth. तो यहाँ पे आपको सिंपली देखो स्पीड दे रखी है और ये अपन को पता है डेंसिटी भी दे रखी है. तो v is equal to root over b by rho and this implies b is equal to v square multiplied by rho. Just substitute b is equal to how much, v square 5.4 into 5.4 into, because kilometers so it's 6 meter per second multiplied by density, it's given as 2.7 ग्राम पर cc. तो उसको अगर अपन कन्वर्ट करते हैं then it will be like 2.7 into 10⁻³ kg per meter cube. Simplifying it all that and we are getting actually b is coming out to be roughly 7.9 into 10⁻10 Pascal. So this is answer to the problem matching with question number 7. It matches with option number 1. Question number 8. The equation of displacement due to sound wave is given by s is equal to s naught sin square omega t minus kx. If the bulk modulus of the medium is b, then the equation of the pressure variation due to the sound wave. तो यहाँ पे आपको displacement wave equation दे रखी है s naught sin square omega t minus kx.
और अपन को पता है प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बल्क मॉडुलस इनटू ds बाई dx. दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव. इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाएगा b s नॉट टू माइनस दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस kx इनटू cos of omega t minus kx multiplied by differentiation, that is minus k, minus cancel, and 2 sin theta cos theta will be sin theta, so p is coming out to be b s naught into k into sine of 2 omega t minus 2 kx, and this is answer to the problem number 8 matching with option number 1, right? So next question number 9. Okay, so next question number 9. The vernier constant of the vernier caliper is, so option least count of the vernier caliper, value of the one division of, so it's just like a standard memory based question, and vernier constant of the vernier caliper, it's called least count of the vernier caliper. So question number 9 answer is 1, least count of the vernier caliper. Next question number 10. Vernier of circular scale is divided into 50 divisions which can coincide with 49th main scale division. Each main scale division is 0.5 degree. The least count of the instrument is. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है 50 vernier scale division matching with 49th main scale division, or 1 MSD is given as 0.5 degree because of circular. तो यहाँ से मैं 1 VSD निकाल सकता हूँ. This is equal to 49 by 50 MSD, and least count of the vernier scale, this is 1 MSD minus 1 VSD, and this comes out to be basically यहाँ पे ये रख देते हैं. So it's 1 minus 49 by 50 into MSD, that is equal to 1 by 50 MSD, और MSD कितना है 0.5 degree, so it's 0.5 degree divided by 50, that is 0.01 degree, and here we know actually 60 minute, or I will write 1 degree is equal to 60 minutes, so this implies 0.01 degree equal to multiply, so 0.06 minutes. So because answer is options are given in terms of minutes, so it will be matching with option number 1. Question number 11. The main scale of vernier caliper reads 10 mm in 10 division. So means one main scale division is equal to 1 mm. 10 division of vernier scale coincide with 9th division of the main scale. When cylinder is tightly placed between the two jaws, the zeros of the vernier scale lies slightly behind, means it's slightly less than 3.2 centimeter, and the fourth vernier division coincide with the main scale division, the diameter of the least of the cylinder. तो यहाँ पे देखो least count हो जाता है simply same formula से 1 MSD minus 1 VSD, it's coming out to be 0.01 mm, ठीक है, और रीडिंग हो जाएगी अपने पास 3.2 because slightly less than this, so minus which coinciding fourth division, so this is multiplied by 4 multiplied by 0.01, ये basically it's in centimeter. Okay, least count because यहाँ पे ये 0.1 mm आएगा और like it will be 0.01 centimeter, so just multiplying and simplifying it we are getting 3. This is 1.4 centimeter will be the what it's saying diameter of the cylinder, that is matching with option number 2. Question number 12. Cells apparatus, we have 2 wires. During experiment we study the extension in one wire, the use of second wire is, तो ये आपको like if you remember the cells experiment then you will be like knowing it very easily. वहाँ पे दूसरे wire को अपन इसलिए adjust करते हैं कि so that like if some extension is happening in this wire then that can be like adjusted with the similar extension in the second wire. So here to support the apparatus because it is heavy and may not break single wire, not to compensate the change in length caused by the change in temperature of the atmosphere during experiments. This is the actual right answer. So question number 12, the correct option is matching with option 2. Question number 13. If percentage error in length, diameter, current and voltage are seen, then which of the following affect percentage error in measurement of resistivity? तो पहले तो देखो V is equal to IR, so this means R is equal to V by I, and R is equal to rho L by A, so this implies rho is equal to V A by this is I into L, ठीक है, ये है, और एरिया हो जाएगा इसमें V into pi d square by 4
I into L। अब यहाँ पे ये रहता है बेसिकली डेल्टा रो बाई, अगर रो बात करें तो इसका डेल्टा V बाई V आएगा प्लस 2 टाइम्स डेल्टा D बाई D आएगा प्लस डेल्टा I बाई I and plus delta L by L। this will be, and this has like maximum contribution, not zero, maximum contribution. So it's saying then which of the following affect percentage error in measurement of resistivity is most? So that's because it's 2 times, so that will be diameter. So option matching with answer matching with option 4. Question number 14. When an ideal gas is compressed isothermally, then its pressure increases. Isothermally means here we know PV equal to constant. तो isothermally इसको compress किया जा रहा है, means volume is decreasing, temperature is constant and volume decreasing, right? So what is happening? Temperature is constant, means RMS speed and all that will be like remaining constant. तो अभी इसमें पूरा pressure increase, so because its potential energy decreases, no, not at all. Its kinetic energy increases and molecules move apart. Kinetic energy increase नहीं होती, kinetic energy temperature पे depend करती है. Number of collisions per unit area with the wall container increases. Yes, because number of molecules जो हैं अभी पहले V वॉल्यूम में थे, अब कंप्रेस हो गया तो V/2 में भी उतनी मॉलिक्यूल्स हैं, तो पर यूनिट एरिया जो कॉलिजन स्ट्राइक कर रहे होंगे मॉलिक्यूल्स, दैट विल इंक्रीज एंड दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रेशर. सो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. इट्स मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Okay, one caliper has 1 mm mark on main scale and it has 20 equal division on vernier scale which matches with 16 main scale division. For this vernier caliper the least count is, यहाँ पे देखो same least count is equal to 1 MSD minus 1 VSD और ये 20 VSD is equal to 16 MSD. तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 VSD is equal to 4/5 MSD. ठीक है, सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/5 MSD. और एक MSD आपको दे रखा है, वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल, तो मीन्स 1 मेन स्केल, हाँ, MSD इज इक्वल टू 1 mm. सो इट्स दिस इज इक्वल टू 1 mm divided by 5, that is equal to 0.2 mm. This is the least count which is matching with option number 4. Next question number 16. ठीक है, under similar condition of temperature and pressure in which of the following gas the velocity of sound will be largest? तो इसमें आपको समझना होगा velocity of sound is equal to root over gamma RT divided by M. So it's basically under similar condition of temperature and pressure. तो मैंने temperature और बाकी चीजें constant है, gamma सब constant है. It's V is inversely proportional to root over M, mass or molar mass of the gas. तो ये जिसका least होगा the speed will be highest, and you know hydrogen has the least mass among the following options. So right option will be matching with 1, hydrogen. And question number 17. Delta U in non-cyclic process of an ideal gas. Okay, so delta U equal to 0 इन ए नॉन साइक्लिक प्रोसेस में तो हर एक में 0 होता है और आइसोथर्मल में भी 0 होता ही है. बट यहाँ पे पूछा था प्रोसेस मे बी आइसोथर्मल, मस्ट बी आइसोथर्मल, मे बी एडियाबेटिक. देखो डेल्टा यू है, इट्स डिपेंड्स ऑन लाइक इनिशियल एंड फाइनल स्टेज. तो इवन अगर प्रोसेस कोई दूसरा है लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेज का टेम्परेचर अगर सेम है, देन आल्सो डेल्टा यू कैन बी 0. तो आइसोथर्मल में तो होगा बट इट्स नॉट मस्ट एक्चुअली in other process also. So that's why the right answer will be like first one match. It may be, is it? Maybe isothermal. Okay, second question. Next question number 18. Heat energy absorbed by the system in going through a cyclic process is shown in the figure. तो इस देखो cyclic process में क्या होता है, basically delta U is equal to 0, then delta Q is equal to delta W. तो जितना वर्क डन किया उतना ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. तो यहाँ पे इसका वर्क डन निकालेंगे एंड पाई work done will be equal to what, area under the graph, and W is equal to delta Q, that is equal to pi R1 R2, and pi R1 कितना हो जाएगा इसका 10. This is pressure kilopascal, so 10 to the power 3 pascal into its volume basically in liter. So ये हो जाएगा, that is also 10 multiplied by 10 to the power minus 3. This comes out to be this gets cancelled, 100 pi joule is the work done, and that is also equal to delta Q, heat supplied. So matching with option number 3. Next question number 19. In a process the pressure of an ideal gas is proportional to square of volume of gas
if temperature of gas is increased in this process, then work done by this gas. So in a process, pressure of ideal gas is proportional to square of volume. तो यहाँ पे दे रखा है P is directly proportional to V square. Alright, so this implies, और अब आपको पूछेगा if temperature of gas is increased in the process, this process, work done by this. तो देख लेते हैं कि volume increase होगा कि नहीं. तो okay. In a process pressure of an ideal gas is a square okay. तो यहाँ पे देखो इसके लिए बोल सकते हैं P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. तो ये वैल्यू रखने पर यहाँ से आ जाएगा अपने पास V1 क्यूब by T1 equal to V2 क्यूब by T2. अब यहाँ पे देखो अगर ये बढ़ेगा and this is constant तो इसका मतलब इसको भी बढ़ना पड़ेगा. और सॉरी temperature, if temperature rises this implies volume also will increase. Volume increase means expansion, and in expansion system does some work. So work done by this gas will be taken as positive, so it will be matching with option number 1. Next question number 20. One mole of an ideal gas at temperature T1 expands slowly according to the law P by V equal to constant. Law P by V equal to constant, actually equal some printing mistake. Its final temperature is T2, then the work done by the gas. तो यहाँ पे देखो जाता है it's sort of like polytropic process where I can write PV power minus 1 is equal to constant, and this is PV power x equal to constant, so x is coming out to be minus 1, and work done is equal to P1, we can write R n R T1 minus T2 divided by this is x minus 1, and 1 मोल दे रखा है तो n की वैल्यू 1 हो गई, और बाकी सब चीज़ें सब्सटीट्यूट करने पर ये अपने पास T2 माइनस and x is equal to minus 1, so this is coming out to be 1 into R into this is T1 minus T2 divided by minus 2, and that is equal to R by 2 into T2 minus T1. This will be the work done, and that is matching with option number 3. Next question number 21. Okay, an ideal gas is taken through the cyclic process shown in the figure. The work done by the gas, तो work done by the gas is basically area under PV graph, और इसका area आ जाएगा 1 by 2 into 3V into 2P P 1 by, so that comes out to be area is equal to W, that is equal to work done, तो वो हो जाएगा अपने पास 1 by 2 into volume हो जाएगा इसका 2V multiplied by pressure, so this is coming out to be PV is the area, and this is the work done matching with option number 2. Okay, so next question number 22. Okay, next question number 22, and तो यहाँ पे आपको दिया गया है PT graph curve for a cyclic process is shown in the figure, then PV graph for this process. तो इसके लिए PV graph के लिए देखो आपको PT graph दे रखा है, so PV. So initially let me start it from initial point. For that I need to draw the PT graph also, PT. So this is the graph, this, and it's this and this. तो ये है अपने पास ग्राफ, this. तो मैं इसको मान लेता A B C D E. अब इसका मैं PT ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. This is PV, sorry PT is already given to us. PT is given and PV we are drawing. तो यहाँ से it will start from here. और इनिशियली A to B क्या है? It's a straight line passing through origin, that means volume must be constant. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Volume must be, it's isoporic process. This and then after that B to C, यहाँ पे क्या हो रहा है? Pressure decreasing, temperature constant, isothermal process. So isothermal process will be like this, hyperbolic. And then C to D क्या है? Pressure constant. तो अब temperature decrease होगा तो volume भी decrease होगा. So it will be like directly proportional this. And then after that this is again temperature constant, so this is isothermal like this, and then again it will be like E to A, again pressure constant, so volume decreasing, it will be like this. So that is matching with option number so this will be the graph, and that matches with option number 4. Next question number 23. Certain gas is taken to the 5 states represented by the dots in the graph. The plotted lines are isotherm. Order of the most probable speed of the molecule at these 5 states are. देखो most probable speed किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे. हायर इज द टेम्परेचर, हायर विल बी द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. और यहाँ पे आपको जो आइसोथर्म्स दे रखी हैं तो इसमें आपको देखो लाइक जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो डेफिनेटली द
point line which is on third will be having highest temperature, so the most probably speed will be higher for third. Then 1 or 2 same isotherm, most probably speed will be like lower than third but equal to 1 and 2, so it will be matching with option number 1 for question number 23. You can just simply check. Question number 24. So there is a cuboid closed container filled with monatomic gas inside it as shown in the diagram. Force exerted by the gas on side A, B, C, D is F, then the force on the side. So गैस अगर एक कंटेनर में है तो उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो ऑन ए बी, लेट्स से प्रेशर इज देन आई कैन राइट फोर्स F1 इज इक्वल टू ऑन ए बी सी डी, सो दिस इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू हाउ मच 2L square. Next let's say F prime and this is equal to pressure, same area is 6L square because 3L multiplied by 2L, so this implies F prime is equal to what? 3F, 3 times of force. That is matching with option number 3. Question number 25. In an experiment, the speed of any 5 molecule of an ideal gas are recorded. ध्यान से रखने का, 5 molecule की speed अपने record की. The experiment is repeated n times where n is very large. The average of the recorded value. तो इसमें क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल की स्पीड मेजर करते हैं, उसी को एक्सपेरिमेंट को अपन n टाइम्स, जो कि n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, हर बार उन 5 मॉलिक्यूल की ही. सो दिस इज व्हाट, लाइक मोस्ट ऑफ द स्पीड्स विल बी लाइक बिलोंगिंग टू द स्पीड ऑफ दीज 5 मॉलिक्यूल्स, एंड दैट्स व्हाई लाइक द एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू व्हाट, most probable speed. So average of the recorded values will be like most probable speed, and that is matching with option number 1. Most probable speed is 2RT by m, the most probable. So this is the answer to the question number 25. Next question number 26. तो यहाँ पे देखा है, a one dimensional gas is a hypothetical gas with molecule that can move move along only a single axis. Following table give 4 situations. The velocities meter per second seconds of such a gas having 4 molecules. The plus and minus sign refer to the direction of the velocities along the x-axis. In which situation root mean square velocity of the molecule is largest? देखो पहले तो आपको VRMS का मतलब समझ में आना चाहिए. This is what V1 square plus V2 square plus so on Vn square divided by n. This is the value of मीनिंग ऑफ रूट मीन स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो, जो थर्ड एंड फोर्थ वैल्यूज हैं वो सबके लिए सेम है, तो वी नॉट हैव टू, बिकॉज वी जस्ट नीड टू कंपेयर. अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है अपने पास, उनकी थर्ड एंड फोर्थ वैल्यूज सबकी सेम है, सो जस्ट लेट्स इग्नोर. अब अपने पास ऑप्शन बचते हैं, दिस इज लाइक ओके, सो ये हो गया. अब अगर यहाँ पर देखते हैं, ऑलराइट, द सिंपल थिंग इज दैट आपको हर एक के लिए करके देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, जो लास्ट वैल्यू है वो क्या हो रही है, बी के लिए सबसे हाईएस्ट, तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि बी लाइक की ज़्यादा हो. दूसरी बात है, लेकिन अगर फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं तो वो क्या हो रही है, सी डी के लिए सबसे ज़्यादा है. तो अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके देख लेते हैं. तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देखो 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 37, और डी का आ रहा है 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 34, और बाकी सी का तो डेफिनेटली उससे कम ही होगा, और ए का तो डी से भी कम होगा. तो बेसिकली बी एंड डी ओनली वन ऑप्शन. तो बी में फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू का आ रहा है 34, सॉरी बी में 37 और डी में आ रहा है that is 34. So definitely B will be having like highest, so B will be the right answer. Question number 26. Next 27. 12 gram helium and 4 gram hydrogen is filled in container of volume 20 liter, maintained at temperature 300 Kelvin. The pressure of the mixture is, so this is by Dalton's law of partial pressure. So we will calculate partial pressure due to each individual gas, and then adding that will be the pressure of the gas. तो वो आपका आ जाता है basically P will be equal to N1 RT1, so N1 plus N2 into RT divided by V. Substituting, so P is equal to how much? First helium के हो गए basically 3 moles, और दूसरी गैस हाइड्रोजन के हो गए 2 मोल्स, और आर की वैल्यू हो जाती है बेसिकली इसमें 8.31 इनटू टेम्परेचर इज हाउ मच 300 केल्विन, और ये लीटर में अगर अपन लेते हैं तो ये हो जाएगा बेसिकली लीटर में, इसी की वैल्यू 10⁻3. अगर वॉल्यूम को हम बेसिकली लीटर लेते हैं, देन आर वैल्यू इज इक्वल टू दिस, एंड वॉल्यूम इज 20 लीटर.
just simplifying this, it comes out to be P is coming out to be roughly 6.25 into 10 to the power 5 Pascal, and that is equal to P is equal to 6.25 ATM, because roughly 1 10 to the power 5 Pascal is equal to 1 ATM. So that is matching with option number 3. Question number 28. In a process, the density of the gas remains constant. Temperature is double, then change in pressure will be. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, P is equal to rho RT by molar mass. ठीक है, डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, R and M डेफिनेटली विल बी केप्ट कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्या हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. अब ये कह रहे हैं इफ टेम्परेचर इज डबल, तो इसका मतलब इनिशियल प्रेशर इज लेट्स से P नॉट, P इनिशियल, टेम्परेचर T इनिशियल इज T नॉट. If temperature is double, T final is equal to 2 T naught. This implies P final will be equal to 2 P naught. तो अब आपको पूछा गया the change in pressure will be, तो change in pressure कितना हो गया, P naught, and that's basically 100% of initial value. So that is matching with option number 1, increase 100%. Molecule of an ideal gas have 6 degree of freedom. The temperature of the gas is T. The average translational kinetic energy of its molecule. तो average translational kinetic energy होती है question number 29. So translational kinetic energy is equal to 3 RT by 2 for 1 mole and 3 by 2 KT. तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, yeah 3 by 2 because it's talking about one molecule, so that is matching with option number 1. Question number 30. VT diagram for a process of a given mass of an ideal gas is shown in the figure. During the process, pressure of the gas. तो यहाँ पे देखो process क्या दे रखा है तुम्हें, this. The given process is like this. ठीक है, 1 to 2. ये क्या है तुम्हारा VT ग्राफ. तो अगर ये रहता, this is you must be understanding. A VT graph passing through origin belongs to an isobaric process. मतलब वहाँ पे pressure constant है. तो for this process it will be like constant pressure, but here it's deviating more. और यहाँ पे pressure constant है, तो यहाँ पे क्या, temperature देखो high है. Temperature high है तो initially मतलब क्या होगा, pressure ज़्यादा होगा. समझ में आ रही है ना चीज़ें, pressure ज़्यादा होगा और finally it's reaching here. तो मतलब यहाँ पे pressure definitely, अगर ये पूरी लाइन पे क्या हो रहा है, P constant. ठीक है, P कांस्टेंट. और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो डेफिनेटली हाइयर टेम्परेचर T2 T1, हाइयर टेम्परेचर मतलब प्रेशर हाई, फाइनली इट्स रीचिंग टुवर्ड्स दिस लाइन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फाइनली यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ भी प्रेशर बराबर है, तो ये इसको मैच कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीजिंग है. तो यहाँ पे क्या हो जाए, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 31. Maxwell's velocity distribution curve is given for the same quantity of two different temperature for the given curve. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सी भी like most probable speed देख लो या कोई like average देखो, तो मतलब like number of molecules. So most probable speed is like increasing for curve 2. So then definitely that speed increasing will be proportional to what, number like temperature. So T2 will be definitely greater than T1. That is matching with option number 2. Question number 32. A gas mixture consists of 2 molecules, 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglect all vibrational modes. The total internal energy of the system. तो internal energy होती है NFRT by 2. सही ना. तो यहाँ पे अभी आपके पास 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, so 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज O2, F is equal to 5 RT by 2 plus 4 moles of argon, so 4 into, for argon degree of freedom will be 3 RT by 2. So this comes out to be okay. तो यहाँ पे this is the like energy, और इसको solve कर देते हैं 10 and this is 12, so it's coming out to be basically this and 2, so it's 6 and 5, that's 11 RT will be the internal energy, and that is matching with option number 4. Question number 33. यहाँ पे रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ स्पीड टू द एंगुलर स्पीड ऑफ डायनामिक गैस एट सर्टेन टेम्परेचर इज. तो यहाँ पे आपको दे रखा है, तो VRMS देखो होता है, VRMS इज इक्वल टू रूट 3 RT by M, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, दैट इज फॉर ए डायनामिक गैस इट्स लाइक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लाइक हाफ I into omega square, and that is equal to
2/2 into RT, ठीक है. सो इट्स कमिंग आउट विद दिस. तो यहाँ से ओमेगा RMS आ जाएगा अपने पास √2 RT/I. Then well, VRMS divided by omega RMS, that comes out with this divided by this, and simplifying it, it's 3I/2m will be the answer, matching with option number. Okay, one more thing, ये यहाँ पे अपन ने मिस्टेक कर दिए. It's talking about ratio of RMS speed to the RMS angular speed of diatomic gas at certain temperature is. तो ये I है movement of inertia of molecule दिया है. So then here we should consider if it is like molecule, then it will be KT and I. This is K for 1 mole, 1 molecule, this. So because I is for 1 molecule, so this is will be the answer. क्योंकि अगर R लेते हैं तो 1 मोल, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होना चाहिए, लेकिन जो I इसमें स्टैंडर्ड दे रखा है दैट इज फॉर 1 मॉलिक्यूल. दैट्स व्हाई वी नीड टू कंसीडर कि दैट इज फॉर 1 मॉलिक्यूल एंड मास आल्सो विल बी फॉर 1 मॉलिक्यूल, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन मैचिंग ऑलमोस्ट लाइक सेम, बट कैपिटल M स्टैंड फॉर मोलर मास एंड स्मॉल m फॉर 1 मॉलिक्यूल, सो इट विल बी मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. The average kinetic energy of the molecule of ideal gas at 10 degrees Celsius has value E. Average kinetic energy, the temperature at which the kinetic energy of the same gas become 2E. तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए kinetic energy is directly proportional to temperature, और let's say E at temperature 10 degree, मतलब यहाँ पे जो temperature होता है that we should take it in Kelvin, not in degree Celsius. So I can write some alpha and Kelvin is 2783. नेक्स्ट E कब हो रहा है, E दैट विल बी इक्वल टू अल्फा सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T. तो यहाँ से अपने पास समझ में आता है दिस इज 2E, सो T इज कमिंग आउट टू बी 2 into 283, ठीक है ना. मतलब लाइक नेक्स्ट, और ये सॉल्व करने पर अपने पास आ जाता है 566 केल्विन. तो इसका मतलब क्या होगा डिग्री सेल्सियस में, तो T2, so this will be equal to 566 minus 273, तो ये आ जाता है अपने पास 293 डिग्री सेल्सियस. And options, it's matching none of these, so that will be answer to question number 34. Next question number 35. Okay, so next question number 35. The volume of certain mass of gas at constant pressure is doubled to its value at 0 degrees Celsius. The temperature of the gas will become. तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, volume of certain gas of constant pressure, like question number 35, pressure is kept constant, means V1 by T1 should be equal to V2 by T2. Volume double हो जा रहा है, so 2V, let's say this is V0, 273, this is equal to 2V0 at temperatures. This is coming out to be T equal to how much, 273 multiplied by 2 Kelvin, इतने केल्विन पे. तो अब आपको इसको डिग्री सेल्सियस में पूछा गया, सो T इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस. आंसर मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 36. Okay, question 36. Average velocity of molecule of gas of molecular weight capital M at temperature T. It's like standard formula based. So अच्छा, one more question. It's talking about average velocity, not average speed. Average speed हो जाती है अपने पास √8 RT/πm. Okay, and it's talking about velocity, तो वो हो जाती है 0. Average velocity is equal to 0, matching with option number 1. Question number 38 and 36 के बाद 37. So next, an ideal gas is taken around ABC A as shown in the above PV diagram. So work done during the cyclic process, work done is equal to area under the graph. तो इसका area अपन निकाल सकते हैं. So W is equal to area, that is equal to 1/2 into 2V, because 3V minus 2V is equal to 2V multiplied with change in pressure, that is also equal to 2P, that is equal to 2PV is the work done, matching with option number 1. Question number 38. 4 particle, one having velocities 1, 0, 2, 3. The root mean square velocity of the particle is, तो VRMS इसमें हो जाता है रूट ओवर स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 particles. This comes out to be how much, 1 plus 9 plus 4, so 10 plus 14, 14 by 4, so 7 by 2, that is equal to root over 3.5, matching with option number which, second. Question number 39. If 2 mole of an ideal monoatomic gas at temperature T0 is mixed with 4 mole of
4 moles of another ideal monatomic gas at temperature 40 knot, then the temperature of the mixture. इस तरह के क्वेश्चंस को अपन करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी और एनर्जी. तो यहाँ पे एनर्जी हो जाती है, मोनोटोमिक गैस है, सो NFRT/2 विल बी द एनर्जी. एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, दोनों ही मोनोटोमिक गैस हैं. तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू मतलब एनर्जी ऑफ लाइक इंडिविजुअल गैसेस. सो N 2 moles, 2 F मोनोटोमिक, सो लाइक 3RT0/2 plus 4 moles again monoatomic 3RT0/2. total number of moles हो गए 6 into R, final temperature T/2. 2 gets cancel and इसको simplify कर देते हैं तो ये हो जाए 2, this is 2 and 1, so it's coming out to be T equal to 3T0 will be the answer, matching with option number 3. Question number 40. Heat is supplied to diatomic gas at constant pressure. The ratio of delta Q by delta U plus delta. Okay, heat is supplied to a gas at constant pressure. तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा Q क्या हो गया, NCP डेल्टा T, that is और डेल्टा U होता है हमेशा NCV डेल्टा T, and W is equal to what, delta Q minus delta U, that is equal to N Cp minus Cv into delta T. ठीक है ना, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, बस इनका रेशियो निकालने का है. तो दिस बाय दिस delta Q by delta U to delta W, so that will be like N, and बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाएगा. दिस इज Cp is to Cv to Cp minus Cv. इसको Cp इनकी वैल्यू सब रख देते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायटोमिक गैस, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी Cp is equal to like for diatomic it's 5 monoatomic 7/2R, this is 5/2R, and this is 1 by basically just 1 second, it will be like Cp minus Cv, that is equal to R. This implies R gets cancelled. 7:5:2. This will be answer, matching with option number 3. Question number 41. An ideal gas expands from volume V1 to V2 in two different processes: isobaric constant pressure, isothermal constant temperature. Then change in internal energy is. तो isothermal में 0 होती है, positive in isobaric process, positive in isothermal process, negative in isothermal. So that means like second is positive in isobaric process. Isothermal में तो 0 रहती है basically. Change in internal energy. Find the efficiency eta of this cyclic process. तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 42. तो यहाँ पे आपको PV डायग्राम दे रखा है. दिस इज PV, दिस और ये कहाँ से, V0 से 3V0, दिस इज P0 to P0. ठीक है, दिस इज द सिस्टम गिवन. यहाँ पे A B C D. अब देखो, अगर इसका टेम्परेचर T0 लेता हूँ तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा तुम्हारे पास 2T0, इसका टेम्परेचर हो जाता है 6T0, इसका टेम्परेचर हो जाता है बेसिकली 3T0. तो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीजिंग मतलब हीट इज सप्लाइड, Q एडेड, यहाँ पर भी हीट सप्लाइड, Q रिजेक्टेड और Q रिजेक्टेड. तो W तो क्या हो जाएगा, सिंपली एरिया अंडर दिस ग्राफ, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2V0 into P0, so 2P0 V0 is the W. अब अपन Q रिजेक्ट निकाल लेते हैं इन दोनों प्रोसेसेस में. दैट विल बी लाइक तो W plus Q rejected will be like total heat supplied, work done divided by total heat supplied will be your efficiency. So let's say Q rejected, so that will be Q CD plus Q DA, and that is equal to, तो CD क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. सो एंड इट्स गिवन, फाइंड द एफिशिएंसी. तो मान के चलते हैं इसमें, क्योंकि कुछ दिया नहीं जो भी है लाइक सब जगह, तो अपन 1 मोल ले लेते हैं. सो बिकॉज इट विल, इवन इफ आई एम टेकिंग इट n मोल, इट विल कम एवरीवेयर एंड दैट विल कैंसल आउट एक्चुअली. तो मैं 1 मोल के लिए ही कैलकुलेशन कर देता हूँ. सो दिस इज इक्वल टू दिस इज n लाइक CV इज इक्वल टू F, और ऑल राइट, यहाँ पे एफिशिएंसी ईटा ऑफ द साइकिल. ओके, गामा यहाँ पे आपको दे रखा है, गामा इज कमिंग आउट टू बी 5/3. दैट मीन्स इट्स ए मोनोएटमिक प्रोसेस. सो दिस इज 3RT0/2, 3R
CV डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3, सो दिस इज कमिंग आउट टू बेसिकली इंटू 3T0/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा टी हो गया 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम CP, सो इट्स 5R इंटू 2T0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है अपने पास 9 + 2 और Q injected will be equal to W plus Q rejected, that is equal to 2P0 V0 प्लस ये RT0 को अपन P0 V0 लिख सकते हैं, तो ये आ जाता है अपने पास 9 + 10 19/2, so 19 P0 V0/2 that is equal to 23 P0 V0/2. Then eta is equal to how much? W divided by Q, so W divided by Q added, and that comes out to be 2 P0 V0 divided by 23 P0 V0 divided by 2. This cancel 4/23 is the answer, matching with option number which one? 1. Next question number, this is 43. So it's something like missing, I can't know like answer it, but its answer given is 1 actually, like somewhat problem. Question number next to 44, something missing in my actually record. Carnot engine having efficiency eta equal to 1/10 has as heat engine is used as refrigerator. तो heat engine की efficiency क्या होती है? Heat engine eta is equal to Q1 minus Q2/2 Q1. This implies 1 minus Q2/Q1 equal to 1/10, and this implies Q2/Q1 is equal to 9/10. ओके, अगर इसी को अब क्या हो जा रहा है, रेफ्रिजरेटर यूज किया जा रहा है, तो उसका COP कितना होता है? दैट इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई W, दैट इज Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2. दिस कैन बी 1/Q1 माइनस Q2 माइनस 1, और Q1 माइनस Q2 की इसकी वैल्यू में अपन 9 रख देता हूँ, 10/9, so it's coming out to be COP is equal to how much? 1 this is 10/9 minus 1, that is basically 9, and this is equal to how much? Q rejected divided by W. So यहाँ पे आपको दे रखा है if work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperatures. So energy absorbed is this, so Q is equal to 9 into W, that is 10, that is equal to 90 joule, and this is actually your answer. And यहाँ पे फिर से printing mistake दे रखे हैं, but option given is 2, so it means like answer will be this. 2 दे रखा है, but there is some typing error in the question actually, because 2 answers are given as same. Question number 45. Ideal gas covered by movable piston is undergone a process P directly proportional to V square, where P is pressure, V is constant volume. In this process, if the gas is expanded such that its volume is double, the ratio of final temperature to initial temperature will be. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पहले तो P is directly proportional to V square इस तरह से, और gas is expanded such that its volume is double the final temperature to the initial temperature. Okay, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो P1 V1/T1 equal to P2 V2/T2, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो मैं बोल सकता हूँ V1/T1 equal to V2/T2, and this implies फाइनल वॉल्यूम क्या है, डबल हो गया है, सो इसको मैं बोल सकता हूँ this is 2 V1/T2, this implies T2/T1 is equal to 8. This is answer to the problem number 45, and that's all about this paper DT11. I hope all this video will be helping you in clearing all your doubts related to this paper. Thank you everyone.